Good evening all, we welcome you to this Paytm First Games, a Super League match between two powerhouse teams. Antique Friends locking thorns today against the Alpha Panthers, and the captain of Antique Friends, Tushar, has won the toss and is elected to field first. Yash Doshi, the captain of Alpha Panthers, being asked to bat first, and the openers have started. And Kaustubh Gupte, the new ball bowler from the Antique Friends. What a start by Kaustubh. As always, he bowls in the right channel from the ball one. And Rudra Pratap is the opening batsman. Rudra Pratap Singh and Sanket Mirkal, the explosive opening pair from the Alpha Panthers. Kaustubh to Rudra. And this time he plays it in the air. That was a good shot, but straight to the mid-on. They take a quick single. Wonderful running between the wickets, and for a moment that was in the air, but played safely. That's a very good start by Kaustubh. A single taken towards the third man. That was a thick edge. This is wonderful bowling by Kaustubh Gupte. That's a good shot this time, a couple of runs. They were planning for a third one as well, but decide against it. Good shot by Rudra there. And both the batsmen now playing well. The first over being bowled nicely by Kaustubh Gupte. 4 without loss the score. And we'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Nishant has been handed over the new ball. He'll be bowling the second over and the first of his spell. And on strike is Sanket Mirkal. This will be a good contest. Nishant, a genuine swinger of the new ball. Rather, he's a spinner, I beg your pardon. An off spinner. So that's a good start by the captain, Tushar. Starting off well, Nishant. And this time, it seems this has been a stumping. They've asked for a third umpire, the on-field umpires. That was a wonderful piece of work by the wicket-keeper. Nile, the wicket-keeper, doing a wonderful job. Just have a look at that stumping. Absolutely brilliant, but seems the batsman was inside the crease, Sanket Mirkal. But the third umpire has been asked for, and we'll wait for his decision.
Not out given by the third umpire, and what a tough decision it would have been. Was a very quick stumping. A lot of time taken by the umpire, which means that this was a very close decision, but in the end, relief for Sanket Miracle. He's still at the crease. A single taken this time, and the end of a very good over. Oh, and that was so close. Good delivery by Nishant. He's been really bowling a tight line. Just have a look at that replay. Oh, that was so close. Very tough for anybody to judge that. And this time, he's been given out. Leg before wicket. The umpire raising his finger, and the first wicket for the Alpha Panthers is down. Rudra Pratap Singh caught in front of the wickets. The LBW decision by the umpire. And it's just 5 for 1 after 1.5 overs. That's a wonderful start by Nishant, the off spinner, giving the breakthrough to his team in his first over itself. What a start that is by Antique Friends. And the bowlers proving the decision to bowl first, taken by the captain Tushar. Right. That's the end of the second over. The score after 2 overs is 5 for the loss of 1 wicket, and a wonderful start by the Antique Friends, and Alpha Panthers immediately put under pressure. Kaustubh Gupta, and what a shot that is. Brilliant shot by Sanket Miracle. Just flicked it towards the mid wicket for a boundary. What a shot that is by Sanket. The first boundary scored. And as we were talking about pressure, immediately Sanket Miracle. It's a wonderful shot. And KU is the new batsman on the non-striker's end. Just have a look at that flick. Brilliant work from the wrist by Sanket Miracle. And as I mentioned earlier, he's an absolute treat to watch once he gets going. But then Kaustubh Gupta is a class act as well. Bowls in the right channel and perfect length with the new ball. A genuine outswinger. Oh, and that's a wonderful shot this time, playing it deliberately in the air. That's a good stop in the third man region, just a single given. Kaustubh bowling a short delivery that time, and Sanket trying to cash it in big.
Another good delivery by Kostov is coming with his next. That's a good shot played with a straight bat. Keyur. Oh, and this time he hits on the pads. A single taken. Leg by signal by the umpire there. So that's an extra added to the tally. It's a good delivery by Kostov, keeping it really tight, and that's the end of another good over by him. 3 overs gone. 11 for 1, Alpha Panthers. A very steady start by them. But then, after the shock in the second over, they will have to build a partnership. We'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। Nishant with the second over, and Keyur drives it well towards the sweeper cover for a single. He's coming back for the second. Good running that is. And the fielder caught napping there. A couple taken easily. That is splendid running between the wickets by these two. Nishant with his next delivery. Oh, and he tries to hit it big this time. Keyur not succeeding. It's a good shot played this time in the gap towards the deep cover. Could be an easy two. And probably they are trying to come for the third, but a good throw from the deep and shows it's just a couple there. That was a good shot played, a short delivery by Nishant. He's bowled really well, Nishant Patankar, given the breakthrough to his team in the very first over that he bowled, second of the innings that was. That's a good shot played straight down the ground. Could be another single. It is. The long off does well. Keyur playing with a straight bat. The hallmark of a good batsman if he plays in the V, and Keyur doing absolutely the same. That's the end of another good over by Nishant. The score is 16 for 1 after 4 overs. We'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। Kostov Gupte with his third over, and what a shot that is by the batsman there. Keyur playing a brilliant shot to Kostov and a boundary towards the covers. Just have a look at the replay. That was a short delivery. Keyur playing it deliberately
over and above the head of the covers fielder. That's a aerial shot played by Keyur and fetches him a good boundary there. So this partnership now gaining momentum. 20 for 1. It's 4.1 overs and Costu with his next delivery. That's a wonderful shot. This time could be a boundary again. What a shot that is. Probably the shot of the evening till now. Keyur is in tremendous touch. Absolutely brilliant shot that is. Straight down the ground for a boundary, and immediately Captain Tushar comes and has a chat with the bowler. Two boundaries on the first two deliveries. What a start to this over, and that too to Kaustubh Gupte, who is one of the best bowlers in the TSL. But this time being taken for some runs here. Wonderful batting by Keyur. That's a good comeback, and that's why he is one of the best. Understands the situation and assesses it really nicely. And in a T20 match, it's not easy to bowl with the new ball, especially when batsmen of Keyur's caliber are batting at the other end, but still he's come back nicely. Oh, and that's a good delivery again. Keyur plays it well towards the covers for a single. This is wonderful batting by Keyur. Technically very solid. That's a good shot by Sanket this time. Towards the deep mid wicket. Could go towards the boundary. But a couple taken there. That's a good chase by the fielder at the mid on. Does well to stop the boundary and saves two for his team. A good throw as well from the deep. And to the pleasure of our viewers, I would like to inform you all that the Hindi commentary will be live again today, as normally is the case in every TSL match. It's Paytm Firstgames, the Super League. A wonderful tournament and a huge opportunity for a lot of players who are playing at the semi-pro level. We have seen some wonderful performances as well. That's the end of the fifth over, and the score after 5 overs is 28 for the loss of 1 wicket. Thank you. Prathamesh coming into bowl the next over. Sir, surname please, surname. तीन Prathamesh. Thank you, sir. Prathamesh Parle starting his first over and the sixth of this innings. Sanket Mirkal is on strike. Oh, and that's a wonderful delivery to start. First up, they are appealing for the LBW, but seems that has hit the bat of the batsman. And probably that's the reason why they're not going for the review. But that's a wonderful start by the bowler. The batsman caught right in front of the stumps, but was quite lucky there. It hit the bat. That's a good delivery again by Prathamesh. A single taken this time by Sanket. Good running between the wickets. Keyur responding really positively on the run. That's a wonderful shot by Keyur, but straight to the fielder and take an easy single. The fielder misfields that. Sloppy fielding there, allowing the batsman to take the single.
that's a good delivery. Wonderful channel that is by the bowler. Just in and around the off stump. Not easy for any batsman to negotiate. Oh, and this time he's appealing for an LBW, but seems it's quite high. And what a chance that was for a run out. They take a very quick single. Sanket Mirkal not comfortable against Prathamesh Parle's fiery bowling for sure. Takes a quick single and just rotates the strike, and that was good thinking on the part of Sanket, but could have been in trouble if that throw from the point would have hit. Oh, and that's a wonderful delivery again. This is great stuff by the pace bowler, and that's the end of a very good over. 6 overs, 31 for 1. And we'll be back after a short commercial break, and we'll now request our fellow Hindi commentator to take over from here after the break. A wonderful start by both these teams to this match. Alpha Panthers 31 for 1 after 6 overs. We'll be right back. Stay tuned. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Rishi Mapara has been handed over the ball, his first over, and we welcome you, Charlene, into the commentary box. जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं स्वागत करना चाहूँगा पेटीएम फर्स्ट गेम्स द सुपर लीग के अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं का। ज़बरदस्त ये मैच चल रहा है। ऋषि मपारा आए हैं, बाएं हाथा गेंदबाज, और आते ही इन्होंने लगभग विकेट ले ही लिया था अपनी पहली गेंद पर। क्या ज़बरदस्त शुरुआत यहाँ पर ऋषि की, और ऋषि के तो क्या ही कहने हैं। जब भी क्रिकेट के मैदान पर आते हैं कुछ धमाका करके ही जाते हैं। संकेत मिर्कल और केयूर बढ़िया खेलते हुए 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और ये अच्छा शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन लिया तेजी से। बहुत ही ज़बरदस्त तालमेल है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। बहुत ही बढ़िया अंदाज में रन चुरा लेते हैं फील्डर के नाक के नीचे से। ऐसा उन्होंने पिछले कुछ ओवरों में भी किया है, और ये एंटीक फ्रेंड्स और अल्फा पैंथर्स के बीच एक बहुत ही धमाकेदार मुकाबला हो रहा है। बढ़िया गेंदबाजी ऋषि, ज़बरदस्त हरफन मौला खिलाड़ी, जेन्युइन ऑलराउंडर क्रिकेट की भाषा में। गेंदबाजी तो अच्छी करते ही हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। एक रन इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में। केयूर के द्वारा 1 रन लिया गया है। संकेत वापस स्ट्राइक पर, और ये पैड्स की तरफ गेंद डाली और 1 रन ले लिया। इस बार लेग बाय होना चाहिए। जी हाँ, अंपायर का इशारा लेग बाय का। एक अतिरिक्त रन। बढ़िया गेंदबाजी है, और केयूर की भी तारीफ करनी होगी। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी है।
इस गेंद को जैसे उन्होंने दबाया, बहुत ही मजे हुए बल्लेबाज लगते हैं। बहुत ही बढ़िया ये शुरुआत ऋषि मापारा की। 7 ओवर के बाद स्कोर है 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और मैं शालीन गुप्ता धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सारे पेटीएम फर्स्ट गेम्स के दर्शकों का, जो लाइव हमें सुनते हैं और हमारी सराहना और करते हैं। और हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। आपके समर्थन से ही हम कोशिश करते हैं कि और अच्छी कमेंट्री आप तक पहुंचाएं। प्रथमेश का दूसरा ओवर, बढ़िया शुरुआत यहां पर। अच्छा शॉट केयूर के द्वारा, 1 रन आराम से ले लिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। संकेत मिर्कल वापस स्ट्राइक पर। और ये बाहरी किनारा 4 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर प्रथमेश की। बहुत भाग्यशाली रहे यहां पर संकेत। जी हां, जेन्युइन आउटसाइड एज है ये। 4 रन के लिए गेंद थर्ड मैन की दिशा में चली गई और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गेंदबाज और ऐसा सोच रहे होंगे। जी हाँ, इस तरह की गेंदों के लिए तो गेंदबाज पूरा दम लगाते हैं। बाहरी किनारे लगे और स्लिप पर कैच हो, लेकिन स्लिप ही नहीं थी वहाँ पर। एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं इस बार संकेत, खासे तैयार थे। उसे जाने ही दिया, डॉट गेंद। प्रथमेश की अगली गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं प्रथमेश, लंबे कद के गेंदबाज हैं। बढ़िया शॉट, ये हवा में खेला हुआ शॉट, 4 रन होना चाहिए। जी हाँ, जबरदस्त प्रहार इस बार संकेत मिर्कल के बल्ले से। बहुत ही जबरदस्त शॉट था ये, कवर्स के क्षेत्र में हवा में खेला हुआ ये शॉट। उन्हें पता था कि वो हवा में खेल रहे हैं और बड़ा सा एक गैप, विशाल गैप उन्हें दिख रहा था और उसी में खेला उन्होंने। जी हाँ, एक्स्ट्रा कवर लिया हुआ है यहां पर तुषार ने। तुरंत ही क्षेत्र रक्षण में बदलाव, एक्स्ट्रा कवर्स को स्क्वायर किया थोड़ा कवर्स की दिशा में। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, तारीफ करनी होगी यहां पर प्रथमेश पार्ले की। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और अच्छा शॉट, ड्राइव किया इसे, क्या ये भी चौका होगा? बढ़िया यहां पर क्षेत्र रक्षण, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक का। जबरदस्त यहां पर क्रिकेट देखने को मिल रही है और 46 रन स्कोर हो गया 8 ओवरों के बाद। अच्छा ओवर ये अल्फा पैंथर्स के लिए। और एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे, सो सैड। सचिन सचिन, मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। ऋषि मापारा आए हैं अपना अगला ओवर लेकर। बढ़िया शॉट केयूर का, और ये बड़ा शॉट हो सकता है। जी हां, 6 रन, जबरदस्त शॉट, क्या प्रहार किया है। रॉफ्टम के बाहर की गेंद को अद्भुत तरीके से लॉन्ग ऑन की ओर से मार दिया 6 रन के लिए। और ये 50 रन पूरे
अल्फा पैंथर्स के इस जबरदस्त प्रहार के बाद और एक बार और हवा में खेला है और ये यहां पर ड्रॉप कर दिया है कैच। खराब जजमेंट। और ये 2 रन ले लिए और ये कैच हो जाता तो यहां पर ऋषि अपना बदला पूरा कर सकते थे छक्के का जो उन्हें लगा, लेकिन क्षेत्र रक्षक की यहां पर चूक हो गई। 2 रन मिल गए लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अच्छी वापसी ऋषि की। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त वापसी की है अल्फा पैंथर्स के बल्लेबाजों ने। दूसरे ओवर में निशान की गेंद पर जब रुद्र प्रताप सिंह आउट हुए थे, ऐसा लग रहा था कि खासे दबाव में खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज, लेकिन क्या वापसी की है। खास करके केयूर की तारीफ करनी पड़ेगी। ऋषि की अगली गेंद, बढ़िया शॉट और सीधे कवर्स के क्षेत्र रक्षक के पास, एक भी रन नहीं। लेकिन उसके बाद ऋषि और माफ कीजिएगा केयूर और संकेत मिर्कल की जो ये साझेदारी रही है वो 49 रन की हो चुकी है। बढ़िया शॉट ये कवर्स के क्षेत्र में, स्वीपर कवर वहां पर कोशिश करते हुए, लेकिन 4 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं केयूर, तारीफ करनी पड़ेगी इस बल्लेबाज की। खेल का रुख पलट दिया है इन्होंने। जबरदस्त कट शॉट, ये देखिए तेज प्रहार और बॉटम हैंड के धनी है ये। और जिस तरह से छक्का मारा था इस ओवर में ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लॉन्ग ऑन पर, दिखाता है कि कितनी ताकत है और कितनी क्षमता है इस बल्लेबाज में। आसान नहीं होते ऐसे शॉट्स मारना ऑफ स्टंप के बाहर से आप लॉन्ग ऑन पे। ओ बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन हवा में खेला हुआ शॉट, एक ही रन होगा लॉन्ग ऑफ की दिशा में। और ये ओवर की समाप्ति, महंगा ओवर, 9 ओवर में 59 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। शिवा कोनार आए हैं गेंदबाजी करने, मध्यम गति के गेंदबाज। बढ़िया शुरुआत, केयूर ने स्वीपर की तरफ खेला और दूसरे रन के लिए भी आ रहे हैं केयूर, लेकिन मना किया वहां पर संकेत ने। सही निर्णय। पारी का ये 10वां ओवर, बढ़िया स्कोर हो गया है, 60 रन। बहुत ही जबरदस्त वापसी यहां पर। शिवा की अगली गेंद, बढ़िया शॉट यहां पर, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खेला हुआ बढ़िया शॉट, दूसरे रन के लिए नहीं आ रहे हैं। क्षेत्र रक्षक का बढ़िया थ्रो डीप से, एक ही रन। एक और खतरनाक खिलाड़ी है शिवा। हरफन मौला खिलाड़ी, मध्यम गति के तेज गेंदबाज और कंधे का इस्तेमाल करते हैं। इस बार भी उन्होंने यही किया और अच्छा शॉट केयूर के द्वारा, लेकिन बढ़िया क्षेत्र रक्षण पॉइंट के फील्डर का, एक भी रन नहीं, डॉट गेंद।
एक बहुत बढ़िया शॉट केयूर के द्वारा स्वीपर कवर पर, एक ही रन। अच्छी गेंद शिवा की एक बार फिर से। जी हाँ, ये तगड़े बल्लेबाज भी हैं शिवा कुनार, लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, बड़े शॉट्स खेलते हैं, जेन्युइन स्ट्रोक प्लेयर हैं। क्या शॉट है, वाह! 6 रन होना चाहिए। जी हां, बड़ा छक्का। खराब गेंद और क्या भरपूर फायदा उठाया संकेत मिर्कल ने उसे। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेला हुआ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर छक्का एक लगाया। ये देखिए क्या शॉट है, डीप बैक स्क्वायर लेग फाइन लेग की दिशा में, बहुत ही जबरदस्त प्रहार। 6 रन, वाह! और ये शॉट्स जो हैं वो सब देन है T20 क्रिकेट की, और ऐसे शॉट्स खेलना बहुत ही मुश्किल। संकेत मिर्कल की तारीफ करनी होगी, और इस बार सूझबूझ दिखाते हुए 1 रन लिया शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, और एक और महंगे ओवर की समाप्ति। 68 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 69 रन, माफ कीजिएगा, 10 ओवर में 69 रन। और अंपायरों का निर्देश है ड्रिंक्स ब्रेक का। थोड़ी देर में जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Good evening, and we welcome you here to the Paytm First Games, the Super League, a blockbuster match in the offing today. Two powerhouse teams are playing against each other, and Yash Shetty leading the Alpha Panthers and Tushar leading the Antique Friends. And Tushar about to spin the coin for the toss, and Yash will call. Tushar, can we have the spin, please? Tails. Tails is the call. Heads. And heads it is. So, Tushar, you've won the toss. What would you like to do? We will field first. Any specific reason for fielding first? Yeah, it's a due factor. Yesterday I heard that it was a due, and they are having a good batting side. So we will set some target and then we will bat, because it's an important game for us and him also. Absolutely, it's a very important game for both the teams, and all the best, Tushar, to you and your team. And Yash, what would you have done if you would have won the toss? I'm happy losing the toss, thank you, because I won the toss last time and I elected to bat, and somehow we aren't being able to put up good totals. So I'm not too sure. I was probably in. We have to put up a good total and go by. So what would be that good total be according to you? 160, 170, because they have a very strong batting lineup. But it has not worked for either of us. Both teams have been in the middle of a lot of losses, and we need this win. Right? So both of us are going to go for it. So all the best to you and your team as well, Yash. And it's a power of house of a game, a cracker of a match in the offing. And the news from the center is that the Antique Friends have won the toss and they've elected to field first. Alpha Panthers would be batting first. Thank you. और वापस आते हैं अब ब्रेक के बाद। जी हाँ, टॉस दिखाया गया था आपको ब्रेक में सारे दर्शकों के लिए। अल्फा पैंथर्स टॉस हार गए आज और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए गए। एंटीक फ्रेंड्स के कप्तान तुषार ने उन्हें आमंत्रित किया। यश दोषी की टीम अल्फा पैंथर्स बल्लेबाजी करती हुई, ज़बरदस्त वापसी उनकी। पहले ही 2 ओवरों में पहला विकेट खो दिया था, लेकिन उसके बाद केयूर और संकेत मिर्कल दोनों ने धमाकेदार पारियां खेली हैं अभी तक। केयूर 33 रन पर नाबाद खेल रहे हैं 27 गेंदों पर, और 31 रन पर संकेत मिर्कल।
और ये ज़बरदस्त शुरुआत यहाँ पर प्रथमेश पटेल पार्ले की, उनका तीसरा ओवर ये। एक रन इस बार, दूसरे रन के लिए भी आ गए हैं। जबरदस्त यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों बल्लेबाजों की। मिड विकेट पर खेला हुआ बढ़िया शॉट था संकेत के द्वारा। और इस बार तुषार के बहुत पास से गई ये गेंद, कप्तान शॉट मिड ऑफ पर लगे हुए थे कैचिंग पोजीशन में। एक रन लॉन्ग ऑफ पर। और ये वाइड गेंद, खराब गेंद लेग साइड की तरफ, और एक अतिरिक्त रन मिला और गेंद भी डालनी पड़ेगी फिर से। बढ़िया शॉट, 4 रन के लिए। क्या शॉट है, केयूर की तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तकनीक के साथ खेलते हैं, तकनीक के धनी है बल्लेबाज। हमने टीएसएल में एक से एक जबरदस्त और बड़े बल्लेबाज देखे, लेकिन केयूर के क्या ही कहने। जी हाँ, ये एक हीरा खोज कर लाए हैं अल्फा पैंथर्स इस टूर्नामेंट में। क्या बल्लेबाजी हो रही है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ शॉट, एक टिप्पा खा के सीमा रेखा के पार, 4 रन। एक और बढ़िया शॉट, और ये 4 रन फिर से। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, वाह। डीप कवर्स के क्षेत्र में खेला हुआ ये बेहतरीन पंच। ये देखिए, खड़े हुए थे सिर्फ और पंच किया तेजी से 4 रन के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रहार था, और क्या ज़बरदस्त तरीके से रोका भी है। चोट लगी शायद उन्हें, जी हाँ, और बहुत ही तेज़ प्रहार था। हालांकि तारीफ करनी होगी यहाँ पर प्रथमेश की। ओवर की समाप्ति 11 ओवर के बाद स्कोर 81 रन। बहुत ही ज़बरदस्त रन रेट हो रहा है अब धीमे धीमे। 8 रन प्रति ओवर से थोड़ा ही कम है रन रेट। एक ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे, सो सैड। सचिन सचिन, मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।
शिवा कोनार अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए स्ट्राइक पर संकेत, करारा प्रहार एक बार फिर से, क्या ये चौका होगा? जी नहीं, वहां पर जबरदस्त क्षेत्र रक्षण, एक ही रन दिया, सीधा शॉट खेला था और लॉन्ग ऑफ से आए क्षेत्र रक्षक और एक ही रन दे दिया इस बढ़िया शॉट पर। इस बार फिर से एक रन लॉन्ग ऑन की दिशा में। शिवा की अगली गेंद, केयूर ने सिंगल लिया और स्ट्राइक पे दिया संकेत को, संकेत ने वापस सिंगल लिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, केयूर वापस स्ट्राइक पर। बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त साझेदारी है अभी तक। केयूर 42 पर आ गए 31 गेंदों के बाद, और संकेत मिर्कल भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 36 पर हैं, इन्होंने भी 31 गेंदें खेली हैं, तो लगभग बराबर रन बनाए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। अभी कठिन समय में जब पहला विकेट बहुत जल्दी आउट हो गया था, बढ़िया शॉट ये गैप में खेला हुआ, लेकिन एक ही रन। ऋषि मापारा वहां पर मौजूद हैं डीप कवर में। बहुत ही बढ़िया ये प्रयास, एक ही रन मिलेगा लेकिन लॉन्ग ऑन की दिशा में, और दूसरे के लिए आना चाह रहे थे, थोड़ा सा वहां चूक गए क्षेत्र रक्षक, लेकिन एक ही रन। क्या बेहतरीन शॉट है और बहुत ही जबरदस्त क्षेत्र रक्षण वहां पर, लेकिन दूसरे रन के लिए आ रहे हैं और जी हां, ले भी लेंगे। तारीफ करनी होगी केयूर की। ओवर की समाप्ति और स्कोर हो गया है 12 ओवर के बाद 88 रन, एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया ये रन रेट प्रति ओवर जो लेकर चल रहे हैं दोनों बल्लेबाज, तारीफ करनी होगी इनकी। अजय थोराट आए हैं गेंदबाजी करने, उनका पहला ओवर। स्पिन गेंदबाज लग रहे हैं, जिस तरह से फिरकी घुमा रहे हैं हाथों में। जी हां, अजय थोराट बाएं हत्था गेंदबाज हैं, क्या बात है। बढ़िया शुरुआत यहां पर, लेकिन संकेत ने भी बढ़िया तरीके से खेला, 2 रन के लिए आएंगे। जी हां, आराम से आ जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त है बल्लेबाजी संकेत मिर्कल की, आराम से स्क्वायर लेग की दिशा में 2 रन ले लिए, वहां कोई क्षेत्र रक्षक तैनात नहीं किया है।
हालांकि गेंदबाजी भी उस हिसाब से फिर नहीं की इन्होंने, पहली गेंद छोटी रखी और वो भी पैड्स पर जा रही थी और आराम से उसे प्लेस करके 2 रन ले लिए स्क्वायर लेग की दिशा में। और अगर बढ़िया शॉट, क्या बात है, स्कूप कर दिया उसे 4 रन के लिए फाइन लेग की दिशा में। और संकेत मिर्कल अब बहुत ही उच्च दर्जे की क्रिकेट खेलते हुए, क्या जबरदस्त शॉट था ये। जी हाँ, इस बार तो गेंद भी फ्लाइटेड थी और क्या बढ़िया शॉट खेला है, वाह, तारीफ करनी होगी यहां पर। स्वीप और स्कूप का मिश्रण खेला यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से 4 रन के लिए। बहुत बढ़िया यहां पर कवर्स की तरफ खेला हुआ ड्राइव 1 रन के लिए। ऋषि मापारा डीप कवर की सीमा रेखा के पास उन्होंने रोका इसे, 1 ही रन इस बार। 95 हो गया स्कोर देखते ही देखते। और हम अगले ओवर में अनुरोध करेंगे अपने अंग्रेजी कमेंटेटर से कि वो आएँ और आप सभी का मनोरंजन अपनी ज़बरदस्त अंग्रेजी कमेंट्री से करें। इस बार सीधे कप्तान के हाथ में तुषार कवर्स पर तैनात हैं। और यह शॉट केयूर का, लेकिन एक भी रन नहीं, डॉट गेंद। लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन इस बार। बहुत ही सधी हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं केयूर और संकेत। छियालीस और माफ कीजिएगा 46 और 44 के निजी स्कोरों पर खेल रहे हैं। और ये बढ़िया गेंदबाजी अजय की, हालांकि थर्ड मैन की तरफ खेलना चाह रहे थे, सफल नहीं हुए। 13 ओवर में 96 रन। और एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। बड़ा शॉट, ये क्या बात है, 6 रन के लिए। निखिल भाटकर आए हैं गेंदबाजी पर, आते ही उनका स्वागत किया है केयूर ने। और ये 50 रन पूरे उनके, क्या बात है। बहुत ही जबरदस्त प्रहार। ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को उठाया 6 रन के लिए। आप रिप्ले देख सकते हैं। इस बार फिर से बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन ही। अजय थोराट ने अच्छी क्षेत्र रक्षण दिखाया वहां पर। निखिल भी जबरदस्त खिलाड़ी हैं, हरफन मौला खिलाड़ी। हालांकि आते ही उनका स्वागत छक्के से किया गया है। और इस बार फिर से संकेत ने एक स्कूप करने की कोशिश की, हालांकि इस बार लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा पैड से लगकर फाइन लेग की दिशा में 1 रन। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, अच्छी वापसी है। और एक और रन लॉन्ग ऑन की दिशा में। और संकेत बिरकल, उनके पास सुनहरा मौका है एक अर्धशतक पूरा करने का।
44 पर खेल रहे हैं, बड़ा शॉट खेलेंगे, अगर छक्का लगता है तो उनका भी अर्धशतक पूरा हो सकता है। हालांकि बढ़िया शॉट यहाँ पर, शॉट थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन लिया केयूर ने। इनकी तारीफ करनी होगी दोनों बल्लेबाजों की, क्या तालमेल है रनिंग बिटवीन द विकेट्स, जब करते हैं तो लगता है कि बढ़िया शॉट इस बार वापस केयूर के द्वारा लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन। और इनकी तालमेल की बात कर रहे थे, दोनों ही बल्लेबाज अभी तक की साझेदारी में एक बार भी मुश्किल में नजर नहीं आए। रन भागते हुए 107 रन हो चुका है स्कोर 14 ओवरों के बाद। और अब मैं अनुरोध करूंगा अपने साथी कमेंटेटर से कि वो अंग्रेजी कमेंट्री में से आप सभी का मनोरंजन करें, और एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Thank you, Charlene, for your wonderful Hindi commentary. Rishi Mapara coming for his second spell, and this time that's a lucky boundary, an inside edge. That was a good delivery by Rishi, but luck seems to be favoring the Alpha Panthers batsman right now. Oh, and that was a good delivery. Just have a look at the replay. That was very close to the leg stump. A boundary there through an inside edge, but that was really close. And suddenly the score has reached 111 for the loss of 1 wicket, and the first wicket was down when the score was 5 runs. So the partnership has already reached 3 figures. Absolutely brilliant batting by these two batsmen, especially Keyur. No credit being taken away from Sanket Mirkal. He has been also absolutely brilliant. Not at all possible for a single batsman to take the score to good levels. And what a shot that is! Wonderful shot for another 6. And just have a look at the replay. That was effortless by Keyur. Brilliant batting that is, and that was not a bad delivery, but look at the way he just picks it up. A flighted delivery and the long off fielder trying his best, but that was a brilliant 6 by Keyur. Seems to be a batsman of a totally different level, Keyur. And he's on song. What a display of shots he's shown us. Treat to watch this batsman. It seems they've lost the ball. We'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Rishi with his next delivery. Just a single that time towards the long off. That's a wonderful shot towards the
deep square leg for a boundary. What a shot that was. Picked it up beautifully. Absolutely brilliant sweep shot there by Sanket Mirkal. And Rishi, very expensive with his overs today, has gone for a lot of runs. Has been a bit unlucky as well, but then these two batsmen have picked him up really beautifully today. Another good shot towards the long on. Will be a couple there. That's a wonderful piece of running by Keyur and Sanket Mirkal, and that's his 50. Absolutely brilliant innings by him. So both the batsmen now have crossed their half century. This is absolutely brilliant comeback by the Alpha Panthers batsmen. They've set up a wonderful platform for the batsmen to come. Captain Yash Doshi, still in the dugout, would be itching to come out, especially when they've scored almost 125 runs in just 15 overs. Brilliant batting that by these two batsmen, especially after they had lost the first wicket in the second over itself. After the end of the 15th over, the score is 124 for the loss of 1 wicket. What a wonderful comeback by these two batsmen. A stunning partnership of 119 runs till now. Kaustubh Gupte bowling his last over, his fourth, and starting off well. Kaustubh, Keyur takes a single towards the long on. He's a genuine swinger of the cricket ball, Kaustubh. Oh, and what a shot that is. Could be a boundary there, but that's a good stop by the long on fielder Nishant. Just a single given, so that's a good piece of fielding. Keyur and Sanket playing brilliantly. Kaustubh has to do a lot of work in this over as well. Oh, and what a shot that is. That could be a boundary. It is a boundary. Wonderful batting by Sanket this time. That was Keyur, I beg your pardon. Both these batsmen eyeing the fine leg. There's no fielder there, and that is what is making them play these shots. And they're executing brilliantly. And Keyur this time fetching a boundary for himself. That's a good shot towards the long off, just a single. Nikhil Bhatkar there. Kaustubh Gupte has been expensive today. He's a wonderful bowler, but then these batsmen have had the better of him today. Oh, and again a boundary this time. This is pretty lucky there. An inside edge, a thick inside edge towards the fine leg boundary. Sanket Mirkal this time. Picking it up beautifully, but getting an inside edge that runs away towards the boundary. Another good shot just by Sanket towards the sweeper cover, just a single there. And a lot of runs being scored in the last few overs by these two batsmen. They're playing it freely now. That's the end of Kaustubh's spell. And another expensive over. The score is 136 for the loss of 1 wicket after 16 overs. Just 4 overs remaining. Kaustubh Gupte 4 overs 33 without any wicket. So
That's a rare sight. We don't see Kostub not among the wickets, and the credit goes to both these batsmen for that. They have not left any stone unturned. And Nishant Patankar coming into ball is next over. The offie being called again. And he is the only bowler who's got a wicket. Well, that's a wonderful shot again this time towards the deep square leg. Could be a boundary, but no. Good stop by the fielder and a couple taken there easily. Nishant trying to bowl the flattish trajectory. Sanket picking it up. And they would want to hit every ball out of the park. Now they're hitting fearlessly already. KU on 72, Sanket on 59. What a partnership that this has been. A flattish delivery by Nishant. Good bowling this is. And a quicker one as well. Just a single towards the long on. He will have to mix it up. He wants to save himself from the wrath of these two batsmen. But he is a very intelligent player. A superb bowler. 2.2 was just 9 runs. This time KU hitting it right over his head, and that's a boundary, and Nikhil there trying his best to stop but not succeeding, and the flattish trajectory being picked up brilliantly by KU this time. He's a smart operator, KU. Just have a look at that powerful bottom hand by KU. The long off fielder tried his best, but that was too good for him. Oh, what a shot this is. This could be a big six. Oh, and this time he's dropped it. That was a catch. He's dropped it. That has gone out of the boundary for a six. This is tragedy for sure. Could have been a wicket for Nishant, but ends up being a six here. That was a flat shot, and that was hit really powerfully. Single taken that time towards the long off, and this could be a very expensive drop. They've dropped KU on 77 and he's now on 76 and he's now on 83. Could reach his 100 also. This is just the 17th over. They're playing absolutely brilliantly. 150 has been achieved after that single. That was a straightforward chance for a catch, and he just messed it up there. The fielder at the long on boundary. A good delivery, and he's trying to come for the single, but Nishant does well there. Could have been a better over if that catch would have been taken, but still a good one by Nishant. 150 for 1 after 17 overs, and I'll request our Hindi commentator now to take you through till the end of this innings. बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवा कोनार आ रहे हैं और आपको रिप्ले दिखाएंगे. देखिए छक्का जो हुआ, जो कैच हो सकता था, ये देखिए सीधे हाथ में कैच था, और इस तरह के कैच आप KU जैसे, और ये 2 बार के बाद ये बाहर गई, 1 बार 2 बार. ऐसी चूक अगर आप KU जैसे बल्लेबाज के लिए करेंगे बहुत महंगा पड़ सकता है. 83 पर खेल रहे हैं सिर्फ 48 गेंदों के बाद. क्या बल्लेबाजी की है. शिवा कोनार आए अपना अगला ओवर लेके. KU बढ़िया शॉट KU का. 2 रन के लिए आना चाहेंगे. पहला रन तेज भागा संकेत ने. KU दूसरे के लिए आना चाहते थे, लेकिन वहां पर संकेत ने उन्हें रोका. निखिल भटकर की बहुत ही अच्छी छवि है एक क्षेत्र रक्षक के तौर पर, और शायद यही संकेत के मस्तिष्क में था, और उन्होंने वहां पर दूसरा रन नहीं लिया. हालांकि अगर लेते तो आउट नहीं होते, क्योंकि वहां पर चूक गए थे निखिल भटकर, हाथ से छूट गई थी, फंबल हो गया था. शिवा की अगली गेंद. संकेत स्ट्राइक पर.
बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और एक ही रन लॉन्ग ऑन के क्षेत्र रक्षक के पास। बढ़िया शॉट, इस बार 4 रन होने चाहिए। जी हां, बढ़िया शॉट, जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी हो रही है केयूर के बल्ले से जो देखने को मिल रही है। आपको रिप्ले दिखाएंगे। एक टप्पे के बाद सीमा रेखा के पार गई शिवा की ये गेंद, सीधा खेल दिया उन्होंने। ये देखिए रिप्ले, बढ़िया शॉट, क्या जबरदस्त बल्लेबाज है। मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत महंगा पड़ेगा जो कैच छोड़ा है केयूर का, और अभी से ऐसा होना शुरू हो गया है। अच्छी गेंदबाजी शिवा की, और इस समय केयूर को डॉट निकालना तो बहुत बड़ी बात है। और 150 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। 6 रन पर पहला विकेट, 5 रन पर पहला विकेट आया था, माफ कीजिएगा, और 151 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। बहुत ही जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी, दोनों ही बल्लेबाजों की तारीफ करनी हुई, खास करके केयूर की। और ये शिवा ने केयूर को आउट कर दिया है, और ऐसा लग रहा था कि ये शतक बनाएंगे, लेकिन 88 पर पेविलियन की तरफ जाते हुए क्या जबरदस्त पारी खेली है। शिवा की भी तारीफ करनी होगी, और ये खेल भावना जो उन्होंने दिखाई है उसकी तो ज्यादा तारीफ करनी होगी। उन्होंने इस बात को माना कि केयूर की बल्लेबाजी बहुत दम था, और केयूर पूरी तरह तारीफ के हकदार। और ये दूसरा विकेट गिरता हुआ 156 के स्कोर पर 18वें ओवर में, और शिवा कोनार्क को ये पहली सफलता है इस मैच में। और एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। कप्तान यश दोषी आए हैं बल्लेबाजी करने, और आपको रिप्ले दिखाएंगे कैसे आउट किया शिवा ने केयूर को। बढ़िया गेंदबाजी, तेज गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा ही बाहर कट करने की कोशिश, लेकिन बल्ला पूरी तरह सीधा नहीं आया, और शायद पहला गलत शॉट खेला होगा इन्होंने। और ये हवा में खेला हुआ शॉट, कैच हो सकते हैं यहां पर, और ये छोड़ दिया, खराब क्षेत्र रक्षण, और ये 4 रन चला गया है। ओ हो, ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। और ये तो कैच होना चाहिए था यहां पर। ये देखिए कैसे छोड़ा वहां पर, और जिसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। चौका भी हो गया उसके बाद। खासे नाखुश होंगे कप्तान और गेंदबाज इस प्रयास से। यश दोषी ने आते ही चौका लगा दिया है, हालांकि भाग्यशाली रहे कि कैच छूटा उनका, लेकिन 4 रन मिल गए, और रन जैसे भी आए रन रन होते हैं। 160 रन स्कोर हो गया है 18 ओवर के बाद, 2 विकेट के नुकसान पर। क्या बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी हुई, और यश दोषी भी यही चाहते थे। उन्होंने बोला था टॉस पर कि 150-160 तो कम से कम चाहेंगे वो, और ऐसा ही हुआ है। कम से कम 160 तो बन ही गए हैं, 2 ओवर बचे हैं पूरे। प्रथमेश आए हैं अपना आखिरी ओवर डालने, प्रथमेश पारले, और ये 2 रन के लिए आते हो यहां पर। क्या जबरदस्त यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स है। तारीफ करनी होगी यहां पर कप्तान यश दोषी की। संकेत को उन्होंने धकेला दूसरे रन के लिए, पुश किया। जी हाँ, यश दोषी बहुत ही मजे हुए कप्तान, बल्लेबाज तो हैं खतरनाक। अगर इनका बल्ला चल जाए तो आखिरी 2 ओवर में भी खेल को पूरी तरह पलट सकते हैं और अपनी तरफ ला सकते हैं। क्या शॉट है इस बार संकेत के द्वारा, लेकिन
पूरी तरह भुना नहीं पाए, 1 ही रन मिलेगा। जी हाँ, इस खासे निराश होंगे संकेत, बड़ा शॉट खेल सकते थे ऑन साइड पर। प्रथमेश एक और फुल टॉस, और इस बार यश ने करारा प्रहार किया, लेकिन इन्होंने भी सीधे क्षेत्ररक्षक के हाथ में। और ये क्या कर रहे हैं, और ये 2 रन हो गए। जी हाँ, इसे कॉमेडी ऑफ एरर्स कहा जाता है। पहले गलती हुई वहां पर दोनों बल्लेबाजों से, रन नहीं था दूसरा, लेकिन फिर भी लेने के लिए आगे बढ़ गए यश। और उसके बाद क्षेत्ररक्षक ने भी खराब थ्रो देकर उनकी गलती को गलत साबित कर दिया, और 2 रन हो गए। क्या शॉट है, बड़ा छक्का। जी हां, इसी की मैं बात कर रहा था। जब इनके बल्ले पर गेंद आती है तो कोई भी बाउंड्री बहुत छोटी लगने लगती है। सीमा रेखा के पार 6 रन लॉन्ग ऑन की दिशा में। खराब गेंदबाजी प्रथमेश की, आप रिप्ले देख सकते हैं। फुल टॉस गेंद, और कहां से खेल रहे हैं यश, 1 फुट आगे से खेल रहे हैं क्रीज के। क्या जबरदस्त प्रहार है। बॉटम हैंड के धनी हैं, 3 गेंदों पर 12 रन बना चुके हैं। इस तरह की बल्लेबाजी हो जाए तो क्या ही कहने आखिरी के 3-4 ओवरों में। क्या जबरदस्त शॉट है, 6 रन, और वाह, यश दोषी जबरदस्त फॉर्म में। 2 बड़े छक्के 2 गेंदों पर। क्या शॉट है, वाह, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। क्या खेलते हैं कप्तान, ये देखिए कितने आगे से खेल रहे हैं क्रीज के। और इस बार फिर से ये करारा प्रहार, और चौका मिलेगा शायद, लेकिन आउट हो गए हैं। बढ़िया कैच, और ये नो बॉल है। एक और जीवनदान। एक रन इस बार। और ये ओवर की समाप्ति, 19 ओवर के बाद स्कोर है 180 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जी हां, 20 रन बने इस ओवर में। 4 ओवर में 46 रन हो गए हैं प्रथमेश पार्ले के। उनका स्पेल खत्म, लेकिन बहुत ही महंगा गिरा ये ओवर। और आखिरी ओवर, और सिर्फ 20 रन चाहिए अब 200 के टीम स्कोर के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी यश दोषी की, कप्तान है, और 19 रन पर आ गए हैं 5 गेंदों पर। इस तरह की बल्लेबाजी कोई करे तो मज़ा आ जाए किसी भी मैच में। संकेत मिर्कल भी डटे हुए हैं 65 पर 51 गेंदों पर। वो भी कुछ बड़ा करना चाहेंगे आखिरी 6 गेंदों पर। शिवा कुनार आखिरी ओवर लेकर आते हुए, बढ़िया गेंदबाजी, और ये यहां पर यश बच गए। विकेट कीपर ने अच्छी कोशिश की, लेकिन थ्रो नहीं लगा। और यश की भी तारीफ करनी होगी, पूरा जोखिम उठा रहे हैं, खतरा लेकर स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे हैं, और वही सही रणनीति भी। अभी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ फॉर्म में है, और इनको रोक पाना इस समय नामुमकिन जैसा है। जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, बड़े शॉट्स खेल रहे हैं, और क्या छक्के मारे इन्होंने 2 पिछले ओवर में।
और इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, क्या यहां पर ये, जी हां, बड़ा छक्का, एक और छक्का यश के बल्ले से, तीसरा छक्का उनका, और लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस बार बड़ा प्रहार 6 रन के लिए। बढ़िया गेंदबाजी शिवा के द्वारा, अच्छी वापसी, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कप्तान यश दोषी की। एक डॉट निकाली उन्होंने, लेकिन वापस तुरंत थर्ड मैन की दिशा में खेला। और ये 5वीं गेंद इस ओवर की, बढ़िया शॉट यश के द्वारा, इस बार आउट हो सकते हैं। और क्या ये आउट है? जी हां, मिड विकेट के क्षेत्र में कैच ले लिया यहां पर, और शिवा ने इनका विकेट लेकर अपना लोहा मनवाया यहां पर। हालांकि यश ने भी अपना काम कर दिया है, कप्तानी पारी खेल ली है। ये देखिए कैसे आउट हुए, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे। शिवा बहुत ही समझदार खिलाड़ी हैं, लेकिन यश ने भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। 9 गेंदों पर 29 रन, वाह क्या बल्लेबाजी की थी। 10 गेंदों पर 29 बनाए उन्होंने। और अब इस पहली पारी की आखिरी गेंद, करण जोशी आए नए बल्लेबाज, शिवा करण को आखिरी गेंद, और ये बड़ा शॉट, और ये देखना है कि ये चौका है कि छक्का है। और ये 6 का इशारा, वाह एक और छक्का, करण ने आते ही अपना काम कर दिया, पहली गेंद पर 6 मार दिया। और 197 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया है यहां पर अल्फा पैंथर्स ने, 3 विकेट के नुकसान पर। और खासा महंगा ओवर शिवा का, ये 43 रन उनके 4 ओवर में बने, और इस ओवर में खास करके अच्छे खासे रन बने हैं। और 198 का लक्ष्य दिया है, आप देख सकते हैं। केयूर 88, संकेत मित्तल 65, यश दोषी 9 गेंद 29 रन। बहुत ही जबरदस्त ये मैच होने की उम्मीद थी हमें, और शुरुआत तो बहुत ही धमाकेदार हुई है पहली पारी में। 197 रन, 3 विकेट के नुकसान पर अल्फा पैंथर्स। और अब एक थोड़ी देर के विराम के बाद वापस जुड़ेंगे आपके साथ दूसरी इनिंग्स, दूसरी पारी को लेकर। 198 का लक्ष्य दिया है एंटीक फ्रेंड्स को अल्फा पैंथर्स ने। हमारे साथ बने रहिए, थोड़ी देर में वापस आते हैं। धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा।
सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम
We welcome you back to the second innings of the Paytm First Games, the Super League match between the Alpha Panthers and the Antique Friends. And Alpha Panthers have scored a wonderful score of 197 runs for the loss of just 3 wickets. They have given a steep target of 198 to the Antique Friends, and good start by Rishi Mapara, the opening batsman, along with Prathamesh Parle and Vishesh Sangoi opening the attack. A good start by him as well, just a single towards the third man region. What a batting performance today by the Alpha Panthers team. Absolutely brilliant, especially by their captain Yash in the last few overs. 29 of just 9 deliveries just set the tone for a big score already. Keyur and Sanket Miracle. Keyur was absolutely brilliant and Sanket was terrific as well. They both scored brilliant half centuries, and that's a good start by Prathamesh Parle, flicking it towards the deep square leg for a couple there. That was a short delivery by Vishesh on the leg stump, and good flick shot to open his account. Prathamesh Parle starts off with a couple. Good delivery to come back this time. Vishesh bowling a good length. Antique Friends have to score 198 to win this match. Rishi Mapara has been asked to open the innings today. The left and right hand combination. Can they do the job for their team? That's a good shot again towards the fine leg. A single there. That's a dead ball. He was not ready, Rishi. And Vishesh bowled the delivery, but the umpire signaled it as a dead ball. Rishi Mapara on strike again. Another good delivery by Vishesh, just a dot ball this time. Rishi Mapara, an absolute cracker of a batsman he is, and that's a wonderful shot this time. Could be a boundary, and it is a boundary. That is a misfield as well towards the third man region. That shot went really quickly, but could have been stopped by the third man fielder there. Well played by Rishi, and the first boundary of this innings. That's a wonderful shot. Just have a look at the replay. Could have been stopped as well. He did well there, but just lost the ball towards the end, and a boundary scored. And the first over has been bowled. The score is 8 without loss. That's a good start by the Antique Friends opening batsman. Bhavin Shah being asked to bowl his second over, the left arm spinner. He's a wonderful bowler. Prathamesh Parle, I beg your pardon. Rishi Mapara will have to do a lot of work.
8 runs without any wicket in the first over. That's a good start by any means. It's a good start by the bowler and a good shot played towards the long off by Prathamesh, and Rishi on strike now. The left arm spinner to the left-handed batsman. This will be a sight to watch. That's a good shot by Rishi. This will be a boundary. What a shot that is. And that is what he's known for. Doesn't wait for the loose delivery, and this time it was pitched just a bit up there. Played it really well. Just wide of the mid-on fielder for a boundary. He's a prolific hitter of the cricket ball, Rishi Mahapara. An absolute treat to watch if he gets going. And a very tough customer to deal with as a bowler. You'll have to do something special if you want to get him out, otherwise he can just destroy any attack. And a single taken, a bad delivery this time, a wide down the leg side, another single taken, 2 runs added to the tally. That's a good shot played in the gap, but no single, as the fielder did well there. Rishi sends him back. Bhavin bowling a good line to the right-hander. Oh, and that's a good shot played again. And this time they take a quick single. That was a misfield by the fielder. Slight mistake, and they take full advantage of that, Rishi and Prathamesh. Again a good single taken. This is brilliant running between the wickets by these two. Just a soft touch and runs for the single. Immediately Rishi and Prathamesh respond really well as well. That's the end of another over. The score after 2 overs is 17 without any loss. Thank you. And Vishesh Sangoi continuing with the second over. On strike will be Rishi.
That's a wonderful delivery and just a single again that time. So 2 runs taken on the first 2 deliveries. 2 singles by both these batsmen. Straight to the fielder this time. He's trying to pull it. Didn't get it right. Rishi the Mapara this time and straight to the mid-off fielder. No run taken. Oh, and this time he tries to pull it again, but this is good bowling by Vishesh. He's not scared of pitching it short. This time he utilizes height to a great extent, and another short delivery this time, and Rishi missing it again. He's trying to pull it towards the onside but not succeeding at all, and he's testing him with the short deliveries. Vishesh Sangoi, a good contest we are seeing here between these two. That's the end of the third over. The score after 3 overs is 19 without any loss. A good start by both these teams. A lot of match left. However, the score is quite a steep one that they have to chase. 10.53 runs per over. 179 still needed in the last 17 overs. And KU, the star of the day till now, who has scored a brilliant 88, has been introduced into the attack. Now strike is Prathamesh, and he hits a big one this time. It seems. No, that is out. That's a wonderful start by KU. He tried to hit a big one, but wonderfully caught in the deep. The long on feeder does well, and KU immediately strikes. And he's done absolutely brilliantly today. Not only with the bat, but gives the breakthrough to his team as well. And the first wicket down for the Antique Friends on the score of 19. We'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers.
And that's a boundary this time. Rishi Mapara hitting it fine towards the short third man. He was trying to cut it, but that took the outside edge. There was no slip. And Nikhil Bhatkar is the new batsman on the non-strikers end. That's a wonderful shot again by Rishi. Another boundary, and Keyur to Rishi now. That's a good delivery. A dot one though. And he struck in his first over. Keyur. Keyur Vora. It's a good shot played by Rishi. Would be a single. But they decide against it. That was good fielding by the point fielder. Oh, and this time this would be a single. Should have been a dot delivery, but then he missed it. The point fielder, who did really well on the last delivery. That's a wonderful first over by Keyur. Nikhil Bhatkar on strike. That's a wonderful over by Keyur Vora. A successful one as well. The first of his spell. 4 overs, 24 for 1. And we'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. कैसे खेलता है? अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Vishesh Sangoi bowling his third over. That's a very good start. A single taken easily by Rishi. And Nikhil back on strike, and a lot of runs to be scored. The run rate is just 6 runs an over currently. They will have to increase it. A good delivery again by Vishesh to Nikhil. Oh, and he tries to pull it. Misses it again. Good deliveries by Vishesh. He's been really wonderful. This right arm pace bowler. This is his third over and just 11 given by him. And the antique batsman finding it difficult to negotiate.
Vishesh Sangoi is super bowling. What a shot this is this time, and immediately Nikhil Bhatkar proves us wrong here. What a shot that is, standing tall, punching it on the back foot for a boundary in the sweeper covers. Brilliant shot that is, and Nikhil Bhatkar is a wonderful batsman. Plays in the top order, has opened the innings as well in few of the earlier matches for the Antique Friends, and has the potential to play a big innings whenever he wants, whenever there is a need for that. Today is the day. We'll have to see whether he could do that today. And what a wonderful delivery that was by Vishesh Sangoi, a slower delivery. A single taken. Shimapara back on strike. Oh, and this time they are appealing for a LBW, but the umpire not interested. A single taken will be a leg by, signaled by the umpire. It is a leg by. That's the end of a good over by Vishesh. 5 overs, 31 for 1. And Kayur coming into ball his next over. Oh, and that's a wonderful shot. Cut really nicely for a boundary there by Rishi Mapara. He has been absolutely brilliant right from the word go. Just have a look at that shot. That was a short delivery, asking to be hit, and he cut it really well in the gap between the point and the backward point. What a shot that was. A good delivery and a dot. Another wonderful shot. This will be a boundary for sure. What a shot that is by Rishi Mapara. Probably the shot of the evening till now. Just stood tall and punched it towards the covers for a boundary. The sweeper cover. Had no fielder, and what a shot that is. Absolutely brilliantly punched there by the left-handed batsman.
Another good delivery by Kayur. It was a good shot played by Rishi, but straight to the fielder. This is the 6th over, and we'll now request our Hindi commentator to join in and entertain all of you with his Hindi commentary from the next over. Kayur to Rishi. Oh, and this time that's a good delivery, a quicker one. Kayur is a smart operator. Dot delivery again. And Rishi has cruised to 25 of just 21 deliveries. 2 boundaries in this over. We'll have to hit more. Another good shot. Another boundary. What a shot that is, and absolutely brilliant batting by Rishi again. This time rocking back on the back foot and hitting it really powerfully towards the covers for a boundary. And the score after 6 overs is 43 for the loss of 1 wicket. We'll be back after a short commercial break, and we'll now request our Hindi commentator to join in. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Anuj Hate is the new bowler. We welcome you, Shalin, to the commentary box. That's a good start by Anuj Hate. Nikhil Bhatkar takes a single towards the sweeper cover. Over to you, Shalin. जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पेटीएम फर्स्ट गेम्स द सुपर लीग का ये बेहतरीन मैच होता हुआ एंटीक फ्रेंड्स 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6.1 ओवर में अनुज हाटे गेंदबाजी करते हुए, और ऋषि मापारा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और वही वो कर भी रहे हैं आज। हालांकि इस बार उन्हें बड़ी पारी खेलनी होगी, लंबी और बड़ी पारी की दरकार इस बार ऋषि मापारा के बल्ले से। ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, 29 पर आ गए हैं 22 रन 22 गेंदें खेलकर। 3 बेहतरीन चौके लगाए थे उन्होंने पिछले ओवर में। अनुज हाटे क्षेत्र रक्षण में परिवर्तन करते हुए, ऋषि भी अपना समय लेते हुए। 7वां ओवर है अभी है, 44 रन स्कोर है, 1 विकेट गिर चुका है। ये वाइड होगी। जी हाँ, खराब गेंदबाजी, लेग साइड की तरफ डाली हुई ये गेंद। और ये एलबीडब्ल्यू की अपील यहां पर, लेकिन मना किया अंपायर ने, सहमत नहीं हुए। और ये तेजी से भागा हुआ 1 रन लिया है। अच्छी रनिंग यहां पर दोनों बल्लेबाजों की।
बढ़िया शॉट इस बार, 2 रन मिल जाएंगे जी, नहीं 1 से ही संतोष किया यहां पर। डीप कवर्स के क्षेत्र में खेला हुआ बढ़िया प्रहार निखिल का, 1 रन के लिए। ऋषि वापस स्ट्राइक पर। और ये वाइड गेंद, और ये बोल्ड कर दिया यहां पर ऋषि मापारा को। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी अनुज की, पहला ही ओवर इनका और बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। और ये गलत शॉट खेला इन्होंने, सीधे बल्ले से खेलते रहेगा तो शायद यहां पर अपना विकेट नहीं गंवाते। और सचिन रिप्ले दिखाएंगे आपको कैसे आउट हुए, ये देखिए। जी हां, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे और मिडिल स्टंप धरती से बाहर आ गया। बहुत ही जबरदस्त यहां पर गेंदबाजी, और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अब दूसरा विकेट भी गिरता हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट गिरा है। छोटे से ब्रेक के बाद वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम। शिवा कोनार नए बल्लेबाज, पहली गेंद बढ़िया अनुज हाटे की, और ओवर की समाप्ति 7 ओवर 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही एक सफल ओवर अनुज के द्वारा। और अब शिवा और निखिल पर दारोमदार, 150 रन चाहिए अभी भी, सिर्फ 78 गेंदों पर। 13 ओवर में 150 रन की आवश्यकता, 11.54 के रन प्रति ओवर की गति से बनाने होंगे। नए गेंदबाज सागर, निखिल स्ट्राइक पर, और ये बाएं हत्था गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी यहां पर सागर की। पहली गेंद अच्छी, और चूक गए वहां पर क्षेत्र रक्षण में, अपनी ही गेंद पर उन्हें रोकनी थी गेंद। अच्छा शॉट था लेकिन रोक सकते थे, 1 रन दे दिया हालांकि। शिवा स्ट्राइक पर, बढ़िया गेंदबाजी है, शिवा ने उसे आराम से खेल दिया। डॉट गेंद, सागर की अगली गेंद, और ये एलबीडब्ल्यू की अपील करते हुए यहां पर, और अंपायर ने इसे आउट दे दिया है। और ये तुरंत ही रिव्यू लिया है शिवा ने। बहुत ही जबरदस्त ये गेंदबाजी और उतनी अच्छी अपील। अब देखना है कि क्या ये आउट है या नॉट आउट है। अंपायर का निर्णय आउट, हालांकि शिवा ने रिव्यू लिया है।
तीसरे अंपायर से निर्णय का अनुरोध किया है। ऑन फील्ड अंपायर ने रिव्यू लिया, शिवा ने आउट करार दिए गए हैं। अब देखना है कि क्या निर्णय आता है तीसरे अंपायर का।
और ये आउट का इशारा हो गया है। नेट तीसरे अंपायर का निर्णय आउट का। और शिवा कोनार 0 पर बिना खाता खोले हुए पेविलियन की तरफ वापस जाते हुए सागर की गेंद पर। नए बल्लेबाज कप्तान तुषार आ रहे हैं अब, और ये तीसरा झटका लगा है एंटीक फ्रेंड्स को शिवा के आउट होने के बाद। 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7.3 ओवरों में। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। कप्तान तुषार शिंदे सागर के खिलाफ। बढ़िया गेंदबाजी है सागर की, बहुत ही ज़बरदस्त इनका ये पहला ओवर। वाइड हो गई इस बार। जी हाँ, कमेंटेटर्स कर्स के बारे में तो हम रोज़ ही बात करते हैं। जब भी किसी गेंदबाज की तारीफ करते हैं तुरंत ही अगली ही गेंद पर कुछ ऐसा हो जाता है कि एकदम विपरीत हो जाता है, जो कि आसान नहीं होता है। और ये लेग बाइस का चौका इस बार। पैड से लगकर गेंद गई फाइन लेग की दिशा में, 4 रन। और ये लेग स्टंप पर डाली हुई गेंद अच्छी गेंद नहीं थी। इसका खामियाजा उन्हें चौका देकर चुकाना पड़ा। हालांकि बल्ले से नहीं लगी ये गेंद। इनका पहला ओवर है और 3 रन ही दिए हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट शिवा का इन्होंने ले लिया है। अच्छी बल्लेबाजी तुषार की। क्यों नहीं कर, बढ़िया गेंदबाजी। एक और डॉट गेंद। क्या जबरदस्त पहला ओवर कराया है सागर ने। 55 रन स्कोर है 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवरों के बाद। 8 ओवरों के बाद, माफ करिएगा, क्षमा चाहेंगे। 8 ओवर समाप्त हो गए हैं, 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और ये बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर। भाविन आए हैं अपना अगला ओवर लेकर। इनका एक ही ओवर हुआ था। भाविन शाह मायाता गेंदबाज। एक रन के लिए शॉट फाइन लेग पर खेला हुआ शॉट, एक ही रन इस बार।
बढ़िया कट शॉट इस बार, स्वीपर कवर के क्षेत्र में, एक ही रन। भाविन की अगली गेंद, बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, तुषार खासी मुश्किल में। भाविन जबरदस्त गेंदबाजी डालते हुए, उनका दूसरा ओवर है ये, और ये हवा में खेला हुआ शॉट, हालांकि एक ही रन होगा। जी हाँ, उनके पास बहुत विकल्प नहीं है अभी, बल्लेबाजों के पास नवा ओवर चल रहा है, सिर्फ 58 रन स्कोर है। भाविन की अगली गेंद, आराम से एक रन ले लिया निखिल ने यहां पर। निखिल के बल्ले से एक बड़ी पारी आज आनी जरूरी है अगर ये मैच इन्हें जीतना है। 9 ओवरों के बाद स्कोर है 59 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही जबरदस्त ये गेंदबाजी हो रही है अल्फा पैंथर्स के द्वारा। पहले ही बल्लेबाजी में अपने जौहर दिखा चुके हैं इनके बल्लेबाज। केयूर 88 बनाकर आज आउट हुए। क्या जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की और कितनी जबरदस्त तकनीक के साथ बल्लेबाजी की। महत्वपूर्ण बात तो ये थी। और ये इस बार 2 रन के लिए आना चाह रहे हैं, डीप स्क्वायर लेग में खेला हुआ बढ़िया शॉट, लेकिन एक ही रन के साथ संतोष करना पड़ा। निखिल का अच्छा शॉट, लेकिन रन एक ही, एक रन से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आपको हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री तो चाहिए ही, ज्यादा अगर मार लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सागर की भी तारीफ करनी होगी, बहुत ही जबरदस्त बाएं हत्था स्पिनर शिवा कोनार को पेवेलियन भेजा उन्होंने, 0 पर, खाता भी खोलने नहीं दिया। और ये देखिए कितना मुश्किल इनको खेलना, बहुत ही ट्रेडिशनल स्पिनर की तरह। और यहां पर ये तुषार रन आउट, ये खराब कॉलिंग। और ये क्या कर रहे थे यहां पर, तो कहीं से भी रन नहीं था। निखिल ने शायद कॉल किया था, विशेष सांगोई ने जबरदस्त यहां पर फील्डिंग करते हुए रन आउट ले लिया एक। ये देखिए, आपको रिप्ले दिखाएंगे। ऐसा लगा कि शायद वापस आएंगे, तुषार ने पहले मना भी किया लेकिन फिर वो आगे चले गए और विशेष सांगोई ने इस बात का पूरा फायदा उठाया। क्या थ्रो है, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की वहां पर। रुद्र प्रताप सिंह कीपर, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने वहां पर रन आउट किया। हालांकि विशेष संगोई की तारीफ करनी होगी। और ये चौथा विकेट गिरता हुआ कप्तान तुषार के रूप में, 60 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और ये अब इनकी पारी तितर बितर सी होती हुई लग रही है। 198 रन बनाने हैं और 60 पे 4 हो गए हैं। कुछ बहुत ही करिश्मा ही करना होगा अब एंटीक फ्रेंड्स को। 10वां ओवर चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। नीलेश शाह है नए बल्लेबाज, और बढ़िया शुरुआत सागर की।
बढ़िया शॉट यहाँ पर निखिल भाटकर का, लेकिन एक ही रन होगा। और नीलेश शाह ने भी अपना खाता खोल लिया एक रन लेके पिछली गेंद पर। नीले वापस स्ट्राइक पर। बढ़िया गेंदबाजी, और इस बार फिर से रन आउट की यहां पर कोशिश, और ये जबरदस्त यहां पर थ्रो और आउट। और पीछे देख रहे थे, ये बहुत बड़ी गलती यहां पर बल्लेबाज के द्वारा। और ये 5वां विकेट गिरता हुआ, और क्या हो रहा है। नीलेश शाह भी पेविलियन की तरफ जाते हुए आपको रिप्ले दिखाएंगे। अरे खराब यहां पर, क्या जबरदस्त यहां पर क्षेत्ररक्षण है। और 5वां विकेट गिरता हुआ, नीले पेविलियन की तरफ जाते हुए, और आधी टीम पेविलियन में जा चुकी है। आपको वापस रिप्ले दिखाएंगे, ये देखिए। और ये पीछे क्यों देख रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती है। अगर ये सामने देखकर और तेज भागने की कोशिश करते तो 1 सेकंड शायद बचा लेते। और ये तो बेसिक था यहाँ पर जो इन्होंने मिस किया है, चूक गए यहाँ पर नीले। हालांकि खराब क्षेत्ररक्षण भी, खराब माफ कीजिएगा कॉलिंग भी, ये रन नहीं था, लेकिन निखिल ने उन्हें पुश किया और खामियाजा एक विकेट के साथ चुकाना पड़ा। 5 विकेट गिर चुके हैं, आधी टीम पेविलियन में वापस एंटीक फ्रेंड्स की। और ये भावेन आए हैं अगला ओवर लेकर। स्कोर है 62 रन 5 विकेट पर 10 ओवर के बाद। और नए बल्लेबाज आए हैं। और ये हवा में खेला हुआ शॉट, और ये 4 रन। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर। जगदीश आए नए बल्लेबाज, और आते ही जबरदस्त प्रहार 4 रन के लिए। इनकी पहली गेंद थी ये, और इस बार स्वीप करने की कोशिश। बढ़िया गेंदबाजी भावेन के द्वारा, अच्छा कमबैक। और ये डेड बॉल होगी, जगदीश तैयार नहीं थे।
अच्छा स्वीप शॉट इस बार, आराम से 1 रन तो होगा ही, और दूसरे के लिए भी आना चाहिए था, लेकिन एक ही से संतोष किया और सही निर्णय। ऐसा लगा कि 2 हो जाएंगे, लेकिन बहुत ही बढ़िया थ्रो डीप से, फाइन लेग से, अच्छा थ्रो वहां पर क्षेत्र रक्षक का। भाविन की अगली गेंद, बढ़िया प्रहार, और इस बार 2 रन लेना चाहेंगे और 2 रन ले भी लेंगे। और ये अच्छा क्षेत्ररक्षण, ये देखिए कि अरे क्या यहाँ पर इन्हें चोट तो नहीं लगी है। 2 ही रन हुए, बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण, संतुलन खोया लेकिन गेंद को जाने नहीं दिया। बड़ा शॉट, ये जबरदस्त प्रहार, और ये 6 रन। लॉन्ग ऑन का क्षेत्र रक्षक, सिर्फ एक दर्शक, क्या शॉट खेला है यहां पर निखिल भटकर ने। और इसी तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं निखिल, और आगे बढ़कर खेला हुआ एक बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए। और जब तक ये बल्लेबाज क्रीज पर डटा हुआ है, मैच खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं। अभी भी 9 ओवर से ज़्यादा का खेल बचा है, और निखिल भटकर में ये क्षमता है कि वो ना ही सिर्फ एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन टीम को मैच भी जिता सकते हैं। भाविन की अगली गेंद, देखते हैं किस तरह से वापसी करते हैं। बढ़िया गेंदबाजी, कट करने की कोशिश, लेकिन वहां पर चूक गए। इस बार उतने फ्लाइट नहीं रखी भाविन ने, और ओवर की समाप्ति। 11 ओवर के बाद स्कोर है 75 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन, मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। सागर अपना तीसरा ओवर डालने के लिए आ रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने गेंदबाजी की है, बढ़िया गेंदबाजी, बैकफुट पे खेला हुआ पंच, एक भी रन नहीं, सीधे कवर्स के क्षेत्र में, क्षेत्र रक्षक के हाथों में। बढ़िया स्वीप शॉट, ये क्या यहाँ पर इनको चौका मिलेगा? जी नहीं, वहां पर एक क्षेत्र रक्षक तैनात है, एक ही रन। जबरदस्त कैमरा वर्क यहां पर। सागर की अगली गेंद, बेहतरीन शॉट, ये 4 रन होंगे। जबरदस्त प्रहार, कवर्स के क्षेत्र में खेला हुआ गैप में एक बढ़िया शॉट 4 रन के लिए। बॉटम हैंड का इस्तेमाल, जबरदस्त प्रहार। जी हां, बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है ये निखिल भाटकर के बल्ले से। ये देखिए रिप्ले, खराब गेंद नहीं थी सागर के द्वारा, लेकिन क्या जबरदस्त प्रहार यहां पर एक फॉर्म में हुए बैट्समैन को कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और इस बार फिर से खेला हुआ अच्छा शॉट, क्या इस बार चौका फिर मिलेगा? नहीं जी नहीं, बहुत ही बढ़िया यहां पर रोका है, क्या जबरदस्त पीछा करा है। यहां पर 2 रन मिलेंगे सिर्फ निखिल को। थर्ड मैन की दिशा में खेला हुआ बढ़िया शॉट, पॉइंट और शॉट थर्ड मैन के बीच से गया 2 रन के लिए। और ये जबरदस्त प्रहार, इस बार फिर से चौका मिलेगा, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर। ऐसा लग रहा था कि चौका होगा, लेकिन 2 ही रन मिले। तीसरे के लिए आना चाह रहे थे, लेकिन 2 में ही संतोष किया।
अच्छा शॉट एक बार फिर से, लेकिन लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में सिर्फ एक रन। थोड़ी सी चूक हुई फील्डर से वहाँ पर, लेकिन कोई खास फ़ायदा नहीं उठा पाया निखिल। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 12 ओवर के बाद स्कोर है 85 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है। 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस रन बनाने दिए हैं अभी तक अल्फा पैंथर्स ने। अब 8 ओवरों में चाहिए 113 रन, बहुत ही बड़ा ये लक्ष्य है। 14.13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अनुज हाटे आए हैं अगला ओवर लेकर। बढ़िया शॉट, ये 4 रन होंगे यहाँ पर। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर आके स्वीप किया 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट, हल्का सा स्कूप भी देखने को मिला उस शॉट में। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और कितनी बढ़िया तरीके से आए जगदीश, और 4 रन यहाँ पर लिए अपने खाते में। बहुत बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी, और अपील कर रहे हैं कॉट बिहाइंड की। क्या यहाँ पर आउट होंगे ये? जी नहीं, अंपायर बिल्कुल भी यहाँ पर समर्थन नहीं दे रहे हैं इस अपील का। और विकेट कीपर तो ऐसा लगा कि पूरी तरह से तैयार थे जश्न मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए, लेकिन अंपायर ने शायद उनकी खुशी में खलल डाल दिया। नॉट आउट का इशारा अंपायर के द्वारा। बढ़िया शॉट यहाँ पर, हवा में खिला हुआ शॉट। क्या यहाँ पर चौका में लेगा इन्हें? जी नहीं, सिर्फ एक रन स्वीपर कवर की तरफ। बढ़िया क्षेत्र रक्षण। बढ़िया शॉट, 4 रन, जबरदस्त प्रहार। सीधे बल्ले से खेला और सीधा खेला जगदीश ने, और जगदीश भी अब बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। और हम अनुरोध करेंगे अपने साथी कमेंटेटर से कि वो कमेंट्री बॉक्स में वापस आएं और अगले ओवर से कमान संभालें अंग्रेजी कमेंट्री की। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है जगदीश और निखिल के द्वारा। एक और बढ़िया शॉट, पुल किया, एक ही रन मिलेगा। क्या दूसरे के लिए आना चाहेंगे? जी नहीं, एक रन से ही संतुष्टि की। अच्छा थ्रो डीप मिड विकेट से वहां पर। एक और बढ़िया शॉट, लेकिन बढ़िया क्षेत्र रक्षण, और एक रन आराम से हो गया। ओवर की समाप्ति यहां पर 13 ओवर के बाद स्कोर है 96 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब हम अनुरोध करेंगे हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर से कि वो आगे अंग्रेजी कमेंट्री प्रस्तुत करें।
और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। कप्तान यश दोषी आए हैं गेंदबाजी करने। बढ़िया शॉट निखिल के द्वारा, करारा प्रहार, और एक ही रन होगा और दूसरे रन के लिए भी आ गए। बढ़िया यहां पर रनिंग भी अच्छी दोनों बल्लेबाजों की। ये 14वां ओवर है। और अब आपको अंग्रेजी कमेंट्री प्रस्तुत करेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। Thank you so much, Shalin, for your wonderful Hindi commentary. And Yash Doshi, the captain of the Alpha Panthers. Oh, that's a poor bit of fielding, and Yash would not be happy with that effort for sure. A single given. Jagdish back on strike. He's trying to hit it big, but not succeeding. 99 for 5 in the 14th over. It's a wonderful bowling performance by the Alpha Panthers. Antique friends losing a lot of wickets on regular intervals. That is not helping the cause for them. Just 6.3 overs left, and that's a big shot, it seems. Oh, and that's a huge six by Jagdish. What a shot that is. And Jagdish seems to be in terrific form today. Straight down the ground and a six. Seems there was a misfield as well that could have been caught, and Yash not happy. His expression says the story. And bat being changed by Jagdish. He was not happy with that shot, although he got a six there. Maybe he wanted to hit it way above the head of the long off fielder. I beg your pardon. And the 100 is up with that six. The score is 105 for the loss of 5 wickets now. Oh, and that's a wonderful shot by Jagdish. Could be a boundary again. But this is good fielding by the fielder. A mid wicket boundary. Just a single there. And this time Nikhil hitting it brilliantly. Could be a boundary. It is a boundary. What a wonderful shot that was by Nikhil. So quite an expensive over till now. And that's the end of the 14th over. The score after 14 overs is 110 for 5. And Anuj Hate coming into ball his next over. When he's appealing for an LBW, but that was drifting down the leg side for sure, and that was quite high as well. Would have missed the leg stump. That turned sharply.
this could have been a wide, but instead it hit its pad. Not a good shot by Jagdish. A dot delivery again. Oh, and this time he hits it in the air. This could be a catch if he takes it. Oh, and he tries it really well, but doesn't reach there. Just a single though. Nikhil back on strike. He's playing a good innings of 42 not out till now. 29 deliveries he's faced. And that's a good shot in the air. Playing it deliberately, and that could be a boundary. But that's a good piece of fielding by the sweeper cover fielder. And a couple taken by Nikhil again. This is good cricket all round. That's a good delivery. Just a single taken, and Nikhil trying to come for the second but not succeeding. Oh, and that's a wonderful shot by Jagdish, and what a stop that is. Oh, that's a catch. What a catch. It seemed it was a stop, but what a lovely catch. Probably the catch of the evening today. One of the best catches you will see in this tournament. Oh, and that's a stunner. That was hit with a lot of power. Look at that reflex action by... Oh, and that is absolutely brilliant. Bhavin Shah there in the square leg region. What a catch that was. For a moment it looked he stopped it, but that's a catch, and absolutely stunning performance there by the fielder. And the 6th wicket for the Antique Friends is down. Jagdish going back to the pavilion on 19, and the score is 114 for the loss of 6 wickets. We'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Nikhil back on strike. Nishant Patankar is the new batsman. He's on the non-striker's end. Yash Doshi bowling his second over, and Nikhil hitting it really well. And a boundary this time towards the deep square leg. Wonderful shot by Nikhil. And Nikhil is playing an absolutely brilliant innings. The start of a new over with the boundary is a wonderful signal for any batting team. Score big. Again in this over he's on 49 already. A lot of runs needed in this match, but still 29 deliveries left, and
81 is the ask in 29 deliveries. Will be a Herculean task, but then Nikhil, the prolific batsman. This time Yash has got him. He's bowled him. Nikhil is out on 49, trying to hit a big shot and not succeeding this time. Yash Doshi says, "You missed, brother. I hit." And he's been appreciated by a lot of Alpha Panthers players, including the captain, and that's a wonderful sight to see. The sportsmanship spirit is above all. And Nikhil playing a wonderful innings of 49 in just 32 deliveries. That's the end of his wonderful innings, and 6 wickets down now for Antique Friends. Just have a look at that replay. Oh, and the leg stump uprooted. Wonderful bowling by Yash Doshi, the captain. He has been on fire today. We'll be back after a short commercial break. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Ajay Thorat hits a brilliant 6 there. What a shot that was, straight down the ground. He's just arrived at the crease and he hits Yash Doshi for a brilliant 6, and the long on fielder just a spectator. A big shot by Ajay, and that's the need of the hour. Every ball they will have to score a big shot, and again a couple taken. Is that a run out? It seems he's reached. They've asked for the third umpire, and that was a run in desperation, the second one. अरे आउट है, आउट है, क्लियर आउट है। स्लो कर देगा आउट हो जाएगा, है ना। उसने ट्रैक भी नहीं किया। हाँ आउट है, स्लो कर। हाँ इसको स्लो कर दे, एक को बस स्लो कर दे। हाँ गया इधर आ गया। पकड़ा उसने, फ्रेम में भी नहीं है अभी तक। बहुत आराम से आउट है, आउट है, आउट है, क्लियर आउट है। चल दे, आउट है सर, आउट आउट। And that is out, given by the third umpire. And Ajay played a good innings, a very short one though, and this run was not required, and the keeper doing really well there. A good throw from the deep. You can have a look there. Oh, and that was clear. He was way short of the crease.
Kaustubh Gupta is the new batsman. Ajay run out and sent back to the pavilion. Courtesy some good fielding from the deep. Kaustubh plays the first delivery defensively. 8 wickets down for Antique Friends, and that's the end of the 16th over. Yash Doshi bowling well. However, he's gone for some runs. 2 overs, 25 for 1. So one delivery left in this over. I beg your pardon, Anuj Hate is starting the new over. Nishant on strike. Anuj has bowled well. 3.1 overs, 20 for 2. Starts off with a dot delivery. Anuj. Nishant on strike. Comes down the track, tries to hit it big. Gets a single in the deep mid wicket region. Nishant. Kaustubh Gupta, the number 10 batsman. A lot of work to be done by these two if they want to win this match. Seems improbable at the moment. That's a wonderful piece of bowling by Anuj. Another good delivery. So 2 dots in a row. Kaustubh not able to negotiate them. Anuj to Kaustubh. That's a good delivery again. So try to cut it, not succeeding. 3 dot deliveries and over, running away quickly. Oh, and this time he plays it straight back to Anuj again. So 4 dot deliveries and Nishant on the other end, reeling there. So that's the end of another good over by Anuj. And he finishes his spell brilliantly. Just coming into ball. His next over, 17 overs. And the score is 126 for the loss of 8 wickets. So this match merely a formality now, it seems. Not easy for the Antique Friends to win this match. 72 needed of just 18 deliveries. A huge ask. Yash Doshi to Nishant. He plays it really well towards the sweeper cover. One bounce straight into the hands of the fielder and just a single there. And he plays it well this time, straight to the fielder though. The backward point stops it. Dot delivery again. So Kaustubh dealing in dots at the moment. He hasn't opened his account. Taken 5 deliveries till now. And this time it seems it's a leg by towards the fine leg. He's trying to come for the second and he is coming for the second, but no. Nishant says no. That was a good decision. Could have been a run out. Leg by signal by the umpire. This time he hits it well. Nishant just a single though towards the long on. The fielder does well. Throws it back to the captain Yash Doshi. Just a single again towards the fine leg, and this time he comes for the second one as well. So a couple taken there by Kaustubh.
That was a poor delivery wide. 2 runs given, so 3 in total. Yash to Kostub. Tries to cut it, doesn't succeed. Another dot. This time he hits it really nicely, but a good stop by the fielder there, Bhavin. He's taken a brilliant catch today, Bhavin Shah. He's all over the place. What a wonderful fielder he is, Bhavin. A single taken this time by Kostub and Nishant. That's the end of the 18th over. The score after 18 overs is 133 for the loss of 8 wickets. Sagar bowling his next over. A good single taken by Kostub there. A quick one. And we request Shalin now to take you through to the end of this innings with his Hindi commentary. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मात्र औपचारिकता ही रह गई है इस मैच में। 10 गेंदें बची हैं सिर्फ। एंटीक फ्रेंड्स आज उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, हालांकि स्कोर भी जो उन्हें मिला था बहुत ही बड़ा था। 198 रन का विशाल स्कोर दिया था पीछा करने के लिए अल्फा पैंथर्स के कप्तान यश दोशी और उनकी टीम ने। एक और डॉट गेंद। और ये बोल्ड क्लीन बोल कर दिया है और 9वां विकेट भी आउट। सागर की तारीफ करनी होगी, कौस्तुभ ने यहां पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, हालांकि क्लीन बोल्ड हो गए। आपको रिप्ले दिखाएंगे, ये देखिए। जी हाँ, ये बहुत ही जबरदस्त फ्लाइटेड गेंद। एक 135 पर 9 हो गया स्कोर। और एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। आखिरी विकेट बचा है सिर्फ एंटीक फ्रेंड्स का और आखिरी 8 गेंदें बची हैं। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। सूरज आए हैं नए बल्लेबाज। 1 रन से उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की, हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए बचा नहीं है। सिर्फ 7 गेंदें बची हैं इस मैच की। बढ़िया शॉट, लेकिन सीधे क्षेत्र रक्षक के हाथ में। और ये ओवर की समाप्ति 19 ओवर के बाद 136 रन 9 विकेट के नुकसान पर। कप्तान यश दोशी अपना आखिरी ओवर डालते हुए, और इस पारी का भी और इस मैच का भी आखिरी ओवर है ये। और ये वाइड गेंद, खराब शुरुआत आखिरी ओवर की। हालांकि मैच तो जीत ही गए हैं।
और ये 1 रन लिया आराम से सूरज ने, बढ़िया बल्लेबाजी। हालांकि 1 रन से अब कुछ खास होना नहीं है, लेकिन निजी स्कोर में बढ़ोतरी। निशान स्ट्राइक पर, और ये अंदरूनी किनारा, 4 रन होना चाहिए, लेकिन नहीं, एक फील्डर तैनात है, 1 ही रन होगा। बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे निशान। अच्छी गेंद, सूरज ने डिफेंस किया। अच्छा शॉट, ये 4 रन के लिए थर्ड मैन की दिशा में, और सूरज ने भी एक चौका लगाया यहां पर, हाथ खोले अपने। बढ़िया शॉट। और इस मैच की अब आखिरी 2 गेंदें, स्कोर 143। और अब आखिरी गेंद इस मैच की, यश की बढ़िया गेंदबाजी यहां पर। सूरज ने भी उसे आराम से खेल लिया, उन्हें पता है कि अब विकेट देना उचित नहीं है, मैच में कुछ खास बचा भी नहीं है। आखिरी गेंद, बढ़िया शॉट सूरज का, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं सीधे बल्ले से, तारीफ करनी होगी इनकी। 11वें नंबर पर आए, लेकिन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। और ये मैच की समाप्ति, बहुत ही बढ़िया जीत मिली है आज अल्फा पैंथर्स को। यहां पर एक तरफा हो गया है मैच, जिस हिसाब से स्कोर बनाया था। और तारीफ करनी होगी अल्फा पैंथर्स के कप्तान यश दोषी और उनके बल्लेबाजों की, खास करके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा दिखाया और मैच इन्होंने जीत लिया है बड़ी आसानी से। 144 पर 9 विकेट 20 ओवरों के बाद एंटीक फ्रेंड्स 53 रनों से मैच जीता अल्फा पैंथर्स ने। और अब हम आपसे विदा लेंगे, एक नए मैच के साथ वापस जुड़ेंगे इस पेटीएम फर्स्ट गेम्स द सुपर लीग प्रतियोगिता के अगले मैच में। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि और धन्यवाद।